To celebrate Bhatia Saab, to celebrate his life, celebrate Bhatia Saab, the human being we all knew. आप लोगों ने कभी भाटिया साहब और मुझे साथ में देखा नहीं होगा, कभी कोई तस्वीर नहीं देखी होगी। फिरोज साहब यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से भाटिया साहब तो मैं सुनता रहता था अनुपम साहब की, जब भी मैं अनुपम साहब को मिलता था। सो एक बार ये भी मैं क्लियर कर लूँ कि मैं अनुपम के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। आप लोग सोच रहे हैं अनुपम ने बुलाया तो मैं आ गया, बहुत बुलाता है, मैं नहीं जाता। But I've come here because I loved Bhatia Saab. Without really meeting him very often, but there was a genuine love for him. मुझे उनसे मिलवाया था, हमने फिल्म की थी, फिल्म which we are very proud of, गांधी माय फादर। और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था, मुझे पता नहीं, मैं डिटेल में जा नहीं सकता, वो फिरोज साहब बताएंगे। बट फिरोज साहब भाटिया साहब बात करते रहते थे। और मेरे को अनुपम साहब ने ये भी बताया कि ये जो आप लोग यहाँ हैं, ये एक्टर प्रिपेयर्स जो ये इंस्टीट्यूशन है मेरे दोस्त की, he was also one of the main architects to make what actor prepares is. And I'm sure, तो उसमें आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आप लोग यहाँ हैं, तो there is some contribution of his also. You know, I was मैंने वो वीडियो किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा, उनके बारे एक स्टूडेंट ने भेजा, और मैंने वीडियो देखा और वो उसने पीछे 2-3 लाइंस लिखी। अनुपम साहब ने भेजा, पता नहीं किसने भेजा है। कभी कभी व्हाट्सएप में मैसेज आता है, यू डोंट नो हु हैज सेंट इट, सो आई डोंट नो हु हैज सेंट इट। तो उसमें नीचे 3-4 लिखे थे कि भाटिया साहब आपके बारे में हमेशा बातें करते थे, आपको बहुत याद करते थे। तो सुनकर बड़ी खुशी हुई। बहुत लोग याद करते हैं, बहुत लोग आपके बारे में बात करते हैं, मगर जब भाटिया साहब जैसे आदमी आपके बारे में बात करे, आपको याद करे, तो आपको लगता है नहीं यार, कुछ ना कुछ बिना ज़्यादा वक्त गुजारे फिर भी एक कनेक्ट था हम दोनों में। एंड वो वीडियो मैंने देखा, 1-2 वीडियोस देखे, और मैंने देखा कि किस तरह वो बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में, और कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और मैं जब चला जाऊंगा ऊपर तो ये चीज़ों का क्या होगा, इसका क्या होगा, ये गाड़ी, ये बुक्स मेरी, ये सारी चीज़ें। देन यू रियलाइज हाउ लाइफ इज़, हाउ फ्रेजाइल इट इज़। So today I think we all are here, so we must celebrate it, we should smile, we should be happy, listen to music, see some performances, and and think about Bhatia Sahib in a very positive, in a very happy, with a smiling face. And before that, I just want you all to see this video, which I saw, and that video really made me happy, positive, and he's not there with us, he's up there today, but I think he'll be smiling over there to see that everybody is here, over here. Without, I'm sure काफ़ी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं, पर कहीं ना कहीं आपको एक वाइब्रेशन मिली उनसे कि आप लोग सब यहाँ हैं. So let's watch this video, please. I'll be happy, and I can see this video again and again and again and again. कुछ जादू है इस वीडियो में, प्लीज देखिए. चीजों को हासिल करना, चीजों को पा लेना, ये सब बड़ी मुश्किल चीज है. जैसे हालात हैं, मुझे लगा अगर मैं मर गया, मैं चटक गया, मैं अगर ऊपर चला गया तो मेरी चीजों क्या होगा, मेरे मकान कौन ले जाएगा, मेरी किताबें, मेरी डीवीडीज, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी कार, क्या होगा. फिर मैंने सोचा, अरे भाई चटक गए तो चटक गए, ऊपर गए तो गए, भूत बनकर थोड़ी नीचे आऊंगा, ये देखूंगा अरे
इस आदमी ने मेरी किताबें ले ली, अरे वो आदमी ने डीवीडीज ले गए, आदमी टीवी ले गया, ये आदमी कार ले गया, मोटरसाइकिल ले गया, मोटरसाइकिल की दुर्दशा करती, कैसे चलाता। हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। फिर मैंने गौर किया, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। जब आए थे तो रोते हुए आए थे, और जब जाएंगे तो लोग रो रहे होंगे। हम क्या ले जाएंगे? यादें, कुछ बुरी कुछ अच्छी, लेकिन यादें लेके जाएंगे। Without taking much of your time, I would like Anupam Saab to come here and pay his love and respect and again celebrate Bhatia Saab. नमस्कार। भाटिया साहब ही ऐसा वीडियो बना सकते हैं अपने कार्यकाल में। भाटिया साहब ने भी कमाल किया हुआ है। मेरी भाटिया साहब से मुलाकात 43 इयर्स बैक लखनऊ में हुई थी। सितंबर का महीना था 1979, और मैंने नया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स ख़त्म किया था 3 साल का। फिर एक 5-6 महीने मैंने वहाँ पर बॉम्बे में अपना दिल्ली में कुछ काम ढूंढा। फिर मुझे किसी ने, राज बिसारिया साहब जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे और हमारे टीचर भी थे, हमारे बहुत अच्छे गुरु टाइप भी थे। गुरु टाइप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे। और उन्होंने कहा कि ये 3 महीने की नौकरी है, यहाँ आकर कर लो, भारतेंदु ड्रामा सेंटर, भारतेंदु नाट्य केंद्र। मैं वहाँ गया और मैं 24 साल का था, और वहाँ मेरी मुलाकात भाटिया साहब से पहली बार हुई। मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं थे, मगर बोले आइए खेर साहब। अब आपको आदत नहीं होती कि 24 साल की उम्र में कोई आपको खेर साहब बुलाए, तो मैंने बड़ा अपने आप को इम्पोर्टेंस महसूस किया। मैंने कहा अरे यार, ये आदमी मुझे खेर साहब बुला रहा है तो इसका मतलब मुझ में कोई तो बात है। मैंने भाटिया साहब की बढ़ोतरी नहीं समझी, अपनी बढ़ोतरी समझी। और वो थिएटर पढ़ाते थे मुझे। इट वाज माय फर्स्ट जॉब। मुझे 1200 रुपया मिलता था, और 1200 रुपया इन 1979 जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट रहा हो उसके लिए 1200 रुपया मतलब 12 लाख रुपया। और अतुल बैठे हैं, ये मेरे स्टूडेंट थे। सलीम आरिफ, ये दोनों यहाँ बैठे हैं, ये दोनों मेरे स्टूडेंट थे। हमारे भाटिया साहब के मतलब स्टूडेंट थे। राज साहब ने रईसी सिखाई थी, कैसे रईस होता है। तो आसपास कुछ रईस ही नहीं था, मगर साहब और शाम को गिलास में विस्की पहली बार किसी ने मुझे ब्लैक लेबल ड्रिंक ऑफ़र की। और भाटिया साहब, देखता हूँ कि मैं कुर्सी पे बैठने लगता हूँ, भाटिया साहब फट एक डस्टर उठा के कुर्सी साफ़ करते थे। वो टेबल थोड़ा सा टेढ़ा साइड से हो जाता तो उसको ठीक करते थे। मेरे को लगा कि क्या आदमी है यार, ये हर चीज़ ठीक ही करता रहता है। But that was what Bhatia Sahib was about. He was
ही वॉज, आई विल नॉट से परफेक्शनिस्ट, बट उनकी आदत थी कि वो हर चीज़ को ठीक करते रहते थे। तो मैं जब पहले 1 महीना वहाँ पर रहा तो मैंने तो कोई भी कमरा ले लिया, तो उन्होंने कहा भाटिया साहब ने कहा मैं आपको कमरा दिलवाता हूँ। तो यू नो व्हेन यू डोंट नो समबडी एंड समबडी टेक्स एन इनिशिएटिव कि मैं आपको कमरा दिलाता हूँ, मैं आपका फर्नीचर मंगवा दूंगा, तो विद इन 2 days माई रूम वॉज सेट। जो बाहर हमने ये कमरा लगाया है, ये भाटिया साहब का टिपिकल एक कमरा है। उनको लकड़ी, बैम्बू, ये सब बहुत पसंद था, और कॉफ़ी ट्रे, ये सब चीज़ें उन्होंने लगा दी, और वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके संपर्क में आए, मगर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको भाटिया साहब की डांट नहीं पड़ी होगी। वो कितने आपसे बड़े थे, आपसे छोटे थे, उसका कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने वो ड्रामा स्कूल की वो 2 साल की मैंने वहाँ पर नौकरी की। फिर मैं बॉम्बे आ गया अपनी ज़िंदगी की तलाश में, कुछ काम की तलाश में, और भाटिया साहब चले गए फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। 2004 के करीब मुझे लगा कि मुझे एज ए बिजनेसमैन स्कूल खोलना चाहिए, पर कैसे खोलूं? कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इस स्कूल में मेरी मदद कर सके, उसको एस्टैब्लिश कैसे कर सके, किस तरह का स्कूल होना चाहिए। तो वीरा देसाई रोड पे मेरा एक छोटा सा ऑफिस था, 1 कमरे का। मेरा 3 कमरे थे, 1 कमरा। तो मैंने भाटिया साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भाटिया साहब आप वापस आ गए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे स्कूल खोलना है। कहता ये आपने अच्छी बात की ना। तो मैंने कहा मगर एस्टैब्लिश कैसे करें? कहता मैं बना दूंगा। एंड ही वॉज द कारपेंटर, he was the architect, he was the सफाई कार्यकर्ता, he was the dean. He became the dean of the school, of that small room जिसमें 8 स्टूडेंट्स थे हमारे। उसकी ओपनिंग में बच्चन साहब आए थे, सुभाष गई साहब आए थे, आमिर आया था, और वहाँ से हमने एक स्कूल की शुरुआत की। और जो अब इन 2005 में, जो अब इन 17 सालों में has become an institution which I'm very proud of. But उसकी नींव, उसको जो कैसा लगना चाहिए, कैसा वो होना चाहिए, वो सब उसकी नींव जो थी वो भाटिया साहब ने डाली थी। मुझे सिर्फ पढ़ाना होता था, टीचर से बात करनी होती थी। He took care of everything, every single thing. एंड वो कैसे करते थे आपको पता ही नहीं लगता था कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, या आपकी मदद कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। warmth, anger, discipline. He was a mixture of all that. Then we did a little better. Then we had a school in आजीवासन हॉल जो 2 स्टोरी का था, उसको भी उन्होंने फिर बनाया, उसको मैं कर दूंगा। और फिर उसको उन्होंने वही उसी तरीके से लकड़ी का सेट, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। तो ये बात मैं बैसाखियाँ कहते हैं ना, जिसके सहारे इंसान चलता है, वो उसका उन्होंने काम किया था। और बड़े अपसेट होते थे मुझसे अगर मैं डिसिप्लिन में थोड़ा सा कम होता था, या किसी को बोलता था चलो छोड़ दीजिए। कहते नहीं, आपने कैसे पढ़ा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? मैंने कहा हमको तो चप्पल वप्पल ही मारते थे। तो कहते आप भी मारिए। इससे ये जो परंपरा है सिखाने की, जो आर्ट है, उसमें डिसिप्लिन से ही काम चल सकता है। एंड देन वी हैड ए फाइट अबाउट डिसिप्लिन पार्ट ओनली, बिकॉज हमारी जो पीढ़ी है वो अलग किस्म की है। हमको मेरे डायरेक्टर ने जूता मारा था, थप्पड़ मारा था, झाड़ू उठा के मारा था, और हमको लगता था कि हर जूते और हर झाड़ू के साथ और हर चप्पल के साथ कुछ और सीखने को मिल रहा है। तो हम सोचते थे थोड़ा सा और मार दे तो कुछ और सीखने को मिलेगा। बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट द जनरेशन लेटर वॉज डिफरेंट। टुडेज जनरेशन वॉज नॉट दैट जिनको आप बोलें सोशल मीडिया शुरू हो गया था। तो एक बार वो किसी बात पर नाराज़ हुए, तो मैंने कहा भाटिया साहब लेट्स बी फ्रेंड्स एंड लेट्स नॉट वर्क टुगेदर। कहते हाँ ठीक है। एंड देन he started doing his own work. But by the time the relationship of a friendship of a family member was always there. By the time he was my biggest confidant. Even in Lucknow, जो मेरे छोटे मोटे मोहब्बत के इंसिडेंट्स थे,
उसमें वो मुझे बताते थे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाटिया साहब आप तो मुझे मत बताइए, आपने पूरी ज़िंदगी एक तरफा मोहब्बत की है हमेशा, आप सामने वाले को बताते ही नहीं थे कि आपको मोहब्बत हुई है, और आप हमेशा मोहब्बत में रहते हो। फैमिली मेंबर की तरह आई मेट हिज मदर, आई मेट हिज of course sister Niruban, I don't know if she's here, Pakhi, Ajay, his younger brother. It was like not knowing that you have a brother, but you have a brother. It was not knowing you have a friend, but you have a friend. And then when I decided to have the school over here, which was now 3 floors, etc., thanks to Mukti Foundation, there was nobody else I would have called to design the school. So I called up Bhatia Sahab. I said, Bhatia Sahab, मुझे ये स्कूल यहाँ खोलना है। उसने कहा मैं आ जाऊँगा. And everybody who comes to this school is so proud of the fact that the school looks like this. And the whole credit goes to only one person, Bhatia Sahab. It's so sad that 5 days before or 6 days before he passed away, I called him up. मुझे उनके साथ जो लड़का था जो 10 साल साथ रहा, Sanjeev, I think his name is, he's here somewhere. He messaged me, there he is, thank you for looking after him so well, thank you, that's very, very kind of you. Please stand up and just show it to everybody. बड़ी सेवा भाव के साथ, I'm sure the families also looked after him, but सेवा भाव से ऐसा गुरुकुल कांगड़ी की पद्धति ही कर सकती है. फिर वो उनका वही कॉफ़ी, मेरे लिए वो हमेशा वो एक फिर उन्होंने मुझे जब ये स्कूल बन गया फिर भी मुलाकात होती रहती थी, बट वी बिकेम बिजी, ही बिकेम बिजी. एंड आयरॉनिकली आजकल सबसे ज़्यादा जो ऐड चल रहा है इस मैच में, उसमें भाटिया साहब सबसे ज़्यादा है. वो बिग बास्केट का जो ऐड है, भाटिया साहब बार बार दिखाई देते हैं. सो व्हेन ही फेल सिक, आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड भाटिया साहब आप निकलो यहाँ से जल्दी, या कहीं और शिफ्ट कर दें, आपको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें. उन्होंने कहा नहीं, मैं बस 3-4 दिनों में निकलता हूँ, फिर मिलके कॉफ़ी पीते हैं और पेस्ट्री वगैरह खाते हैं. एंड दैट नेवर हैपेंड. the day when I went here, he was already, unfortunately, in ventilator, and next day. So I said, how do we remember Bhatia Sahab? I said, let's do something, let's pay a tribute to him by celebrating his life as if he is sitting here and watching what is happening in celebration of my life. So today, we have put things together which he was very fond of. He was very fond of classical music. He was very fond of kullad tea with samosa and pastry. We'll get that outside. So what we will see over a period of next some time will be people who were very close to him. I can see Firoz, thank you for coming. That's very kind. Mahima, everybody is here. Rakesh is here. Mr. Kaushik will be here anytime. So we will be celebrating his life by the things that he admired, like classical music. And in this, there are a lot of people who have helped us. There is a Araj organization of young boys and girls who will perform. I will request them to set up their music. These are the amazing. They will perform and entertain Bhatia Sahab with the kind of music that he liked. They will, after that, we have some other interesting performances, and the whole atmosphere is that of a theatre because he loved theatre. He toured with me all over the world. मुझे कोई बता रहे थे कि भाटिया साहब उनको कह रहे थे कि मेरे को खेर साहब के हाथ पूरा वर्ल्ड देखने को मिला है.
because he traveled with us when we did Kuch Bhi Ho Sakta Hai, all over America, other places. And I hope that wherever he is today, also he is here in the audience in spirit, and that he enjoys this presentation, and we'll continue talking about him. Greatness is not about what you've achieved in life in terms of the best actor, the best musician. Greatness is something how many people's lives you have touched. And I think that is what he did. He touched everybody. Here it is, Araj.
बच्चों ने, क्या किया है बच्चों ने, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सच एन अमेजिंग, ही वुड हैव बीन वेरी प्राउड, सो आर वी have it, we do it for ourselves. I do it for, my theory is that I do it for ourselves, our people, because मौत डरावनी है मगर ज़िंदगी उससे खूबसूरत है, और अगर ज़िंदगी को जिया जाए जो कि भाटिया साहब ने पूरे तरीके से जिया और अपने असूलों पे जिया। भाटिया साहब इतने असूलों वाले इंसान थे कि कभी कभी उनके असूलों से और उनकी जो एक ढीठपना था उनके असूलों में, वो तकलीफ देता था, बट ही नेवर चेंज दैट, he never changed that. That's what the greatness is all about, that I will not compromise with my principles. And he maintained his relationship with people that came in his life, his relationship with people, his relationship with actors, his relationship with theatre people. The gentleman I'm going to invite next to speak about Bhatia Sahab had a long association with Bhatia Sahab in terms of his co-worker, स्टेज मैनेजर, आर्ट डायरेक्टर, और बहुत सारा हमने काम साथ में किया है। हमारे थिएटर जगत के बहुत 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 जिनकी मैं बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ, डायरेक्टर, राइटर फ़िरोज़ अब्बास खान साहब, बहुत ही मैंने सीखा है उनसे, और भाटिया साहब ने भी मुझे लगता है बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी की कोई ऐसा पड़ाव नहीं होता जिसमें आदमी को सीखने को नहीं मिलता। मेरा खुद का एसोसिएशन, उन्होंने मेरे 3 प्ले डायरेक्ट किए, सालगिरह कुछ भी हो सकता है, 2 प्ले, और इतने हमने शो साथ में किए। और भाटिया साहब और फ़िरोज़ साहब का रिलेशनशिप बड़ा पिक्यूलियर था, उसके बारे में वो खुद ही बताएंगे। आई विल रिक्वेस्ट फ़िरोज़ अब्बास खान साहब टू कम ऑन स्टेज एंड टेल अस समथिंग अबाउट हिज लाइफ विद Thank you. Thank you very much. I never thought that an occasion will come that we will have to speak about Bhatia Sahab, because I felt that Bhatia Sahab was timeless. We will go, but he will always remain. You know, there are some characters, some people in the life, like those characters in those magic realism, that they remain all the time. So Bhatia Sahab, if you see him now, he exactly is what I have seen him for 30 years. He looked the same and he behaved the same. He never changed and he never aged. And that is what Bhatia Sahab. The day when I came to know that Bhatia Sahab is gone, I went to the funeral and of course said goodbye to him. And then at the same time, I came home. And then on television, I saw him again in an ad which Anupam referred to of Big Basket. And it dawned on me that there are 2 realities. One reality is of a personal pain and a personal grief and a personal loss that each of us who have been touched by Bhatia Sahab will have to negotiate. And that loss cannot be expressed in language, because language is inadequate to express that loss or be able to broadcast. No, it has to be dealt in your own silences and in your very quiet place. It's not for public display. And that grief, that loss becomes memories, and you will live in those memories for the rest of your life, enrich your life with those memories. And then there is a Bhatia Sahab who's a teacher, who is a designer, a Bhatia Sahab who's a director, Bhatia Sahab who's a writer, he's a technical director, he's a mentor, he is a confidant, he is so many things. And that Bhatia Sahab needs to be celebrated. And I must express my gratitude to Anupam that he and only he is somebody who's so invested in life that even Bhatia Sahab passing away, he's made it into a joyful experience for us. Only he can do. And I think this occasion of having Bhatia Sahab, and celebrate him,
is deeply moving for all of us. And as you would know, and if you all have met Bhatia Sahab, that there was not one Bhatia Sahab that you met. There were at least 2 or 3 Bhatia Sahab at the same time. Either he's your teacher, so he's also your mentor. Or if he's your friend, he's also a professional. And Bhatia Sahab can be extremely exhilarating and frustrating at the same time. Sometimes I would call him that he was sublime and ridiculous at the same time. But that was my opinion of him, which was completely wrong. It was wrong because Bhatia Sahab came into my life because of Anupam. He said, here is Bhatia Sahab. He's going to be part of the technical team that we are going to go. And we were, on first sight, there was firecrackers. We didn't like each other. And I later on realized that it was not him, it was me, because I was unreasonable and I was impossible, whereas Bhatia Sahab was practical and real. So when impossible and real clash with each other, you only have fireworks. And introspection is not one of the great qualities of human beings. We always feel somebody else is wrong. I never realized that it was me who was wrong and not Bhatia Sahab. So he was a great teacher for me in my life. And so Bhatia Sahab, if you met him, you got a whole lot of Bhatia Sahab that you will see. But at this point, I can only tell you one thing, is that what we are left with now is Bhatia Sahab now converted into an idea. Bhatia Sahab is now an inspiration, an idea and inspiration that is based on values, those values which are timeless in its own ways, values and teachings which will empower you as we go along in life. Bhatia Sahab, great aesthetics, and today I'm very glad that Anupam has actually converted his aesthetics, and as he would be very happy to see, because every part of him was aesthetics. So Bhatia Sahab, the great professional, the Bhatia Sahab, somebody who believed in excellence, and more importantly, a Bhatia Sahab who is full of humanity. Bhatia Sahab who has a legacy of compassion. A Bhatia Sahab which says that giving was the most important part in his life. And all his life, Bhatia Sahab has never asked for anything. He has only given today. So today, I pay my tribute to him, and I'm very glad and thankful to Anupam that he has called me today to pay my respects to this extraordinary gentleman called Bhatia Sahab. Thank you.